Well, so this is a prism where a ray of light is incident from a rarer medium to denser medium. This is the normal at the first point of incidence. So at the first point of incidence, it should have traveled along this direction, but instead it will bend towards the normal and incident on the second phase. When it is incident on the second phase, at this point it should have traveled straight, but what will you do? You are moving from denser to rarer medium, it should bend away from the normal, right? So it bends towards the base. So what happens in both the phases? It bends towards the base. First phase में भी towards the base bend किया था, second phase में भी towards the base bend किया था. अब थोड़ा ध्यान से देखो, this is the first angle of incidence I, this is the first angle of refraction R1, this is the second angle of incidence, but we write it R2. Now the reason is principle of reversibility of light. What does it say? It says that if you made a ray incident along this direction, if it has taken up this path, if you do make the ray incident from the other way, means if you allow the ray to pass like this, it will exactly take up the same path. This is the principle of reversibility of light. So अगर इसे हम लोग R1 मार्क करते हैं तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से इसको हम लोग R2 मार्क करते हैं. So ये जो फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है उसको एक्चुअली हम लोग इसको I1 और इसको I2 मार्क करते हैं, but it is better to represent this as E, the angle of emergence. I is the angle of incidence, R1 is the first angle of refraction, R2 is the second angle of incidence, and E is the angle of emergence. Angle of incidence, R1, first angle of refraction, R2, second angle of incidence, E হচ্ছে angle of emergence. Angle of emergence. Okay, I'll give you time to write. I'll give you time to write, time to draw. पहले समझो, थोड़ा ध्यान से समझो, quickly. ठीक है, जल्दी से बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझो. मान लो ये A है, ये वाला point of incidence B है. These two normals are meeting at the point C और ये point of incidence D है. ठीक है? Can you identify the quadrilateral ABCD? ABCD को identify हो रहा है? Alright. पहले before that, देखो ये first ray of incident था, first incident ray था, जो सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? वो bend करके नीचे आया. तो जितना एंगल में bend करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Angle of deviation. क्या बोला जाता है? Angle of deviation. Pritesh, angle of deviation কি বলে আছে? অন্যদিকে মন দিলে আমি কিন্তু মাথাটা ফাটাবো প্রিটেশন বলে রাখছি. Second angle of incidence এটা say the ray should have gone straight like this, but it bends towards the base. So this angle is the second angle of deviation delta 2. So if we back produce this final emergent ray, then this angle can also be written as delta 2, you know, vertically opposite angles. Yes or no? तो अगर ये delta 2 है, अच्छा ठीक है. अब now look at this very carefully. ये vertically opposite angles are equal के हिसाब से I equal to delta 1 plus R1 लिख सकते हैं. तो यहाँ से delta 1 क्या आएगा? और यहाँ पर second surface में delta 2 plus R2 equal to E. So E is equal to delta 2 plus R2. तो यहाँ से delta 2 equal to E minus R2. Can I say that? Yes or no? अब मुझे एक चीज बताओ. ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल इमर्जेंट रे है, राइट? कैन एवरीवन आइडेंटिफाई दिस? ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल इमर्जेंट रे है. सो यहाँ पर जो एंगल बना ना, दिस इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है? सो देयरफॉर अब मुझे बताओ, यू नो दैट एनी ट्रायंगल exterior angle of a triangle is sum of interior opposite angles. So like, can I say this is delta, this should be equal to delta 1 plus delta is equal to delta 1 plus delta 2. Now see, delta 1 and delta 2 both are available to us. I minus R1 plus E minus. So can I write delta is equal to I plus E minus of R1 plus R2?
यस और नो? हाँ, अच्छा अब मुझे बताओ, कैन यू सी द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी? एंगल एबीसी कितना है बता पाओगे? तनु, एंगल एबीसी कितना है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों 90 डिग्री क्यों? बिकॉज इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल कितना एंगल में रहता है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री। सो कैन आई से दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री? क्यों? एक क्वाड्रिलेटरल का चार एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। सो उसमें से दो एंगल अगर 90 90 180 निकल जाता है तो बाकी दो एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। अगेन लुक एट द ट्रायंगल BCD। कैन एवरीवन सी BCD? उसमें मुझे बता सकते हो R1 plus R2 plus C कितना है? Sum of three angles of a triangle is 180 degree, right? So from these two, what can we say? A is equal to, can you understand this why? क्योंकि यहाँ पर A is 180 degree minus C, यहाँ पर भी R1 plus R2 is 180 degree minus C। तो यहाँ इन दोनों में से A is equal to R1 plus R2 बोल सकते हैं। So फिर ये वाला इक्वेशन से क्या मिलेगा हम लोगों को? डेल्टा इक्वल टू I plus E minus, you understand why? Because R1 plus R2 था ना, तो R1 plus R2 तो A निकल गया। So the angle of deviation is given by I plus E minus A। अब जल्दी से बनाओ quickly। कुछ एक्स्ट्रा डेटा है वो लिखना है हम लोगों को। First angle of deviation। তাড়াতাড়ি লেখো, একটা কথা বলবে না, একটা কথা বলে সময় নষ্ট করবে না, কিন্তু এটা ছাত্র না হয়ে গেলে। Total angle of deviation। Total angle of deviation। Now give a prediction. What happens if I change the angle of incidence? Angle of incidence अगर small से gradually ज़्यादा करेंगे तो angle of deviation कैसे change होना चाहिए? मतलब बढ़ते जाना चाहिए, increasing function होना चाहिए। मतलब I increase करेंगे तो delta भी increase करते जाना चाहिए, right? ऐसा एक general perception आना चाहिए क्योंकि delta equal to I plus something कुछ हुआ है, right? लेकिन actually नहीं है। क्यों होता है? जब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं रिगार्डिंग I एंड डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे और एंगल ऑफ डिविएशन कैसे चेंज कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो उसमें वी गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक पैराबोलिक ग्राफ आता है। क्यों पैराबोलिक ग्राफ आता है? द रीजन इज, पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है तब एंगल ऑफ डिविएशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है, और ग्रेजुअली जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तब एंगल ऑफ डिविएशन घटता है, घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू, एंड देन फिर से अगर इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन फिर से इंक्रीज करेगा। सो वी गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। अब देखो इसका एक कांसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनो। कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए अगर हम लोग एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इट विल कट द ग्राफ एट हाउ मेनी पॉइंट्स? इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पॉइंट जो है दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द अदर पॉइंट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो दो पॉइंट में कट कर रहा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, बिकॉज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग E को I ले लिए तो I विल बिकम E, इज दैट क्लियर? लेकिन एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट में अगर हम लोग पहुंच जाएंगे, that is delta minimum, that is the minimum angle of deviation। उसके लिए देखो I और E सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा,
ये दो पॉइंट में कट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। सो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है मतलब ये दो पॉइंट एक ही पॉइंट में आ गया। सो I इक्वल टू E बन जाता है। Is that clear? So for minimum angle of deviation delta equal to delta minimum, I becomes equal to E and R1 becomes equal to R. So I equal to E, let it be I, and R1 equal to R2, let it be R. क्यों I equal to E अगर होगा तो R1 equal to R2 होना ही पड़ेगा ना? Can you understand why? Because sin I by sin R is the same refractive index for both the faces. तो इसीलिए I equal to E होगा तो R1 equal to R2 होना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ हम लोग क्या देखा है कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या था बताओ, I plus E means I plus I minus A, that means delta minimum is equal to 2I minus A, right? So for minimum angle of deviation delta minimum will be 2I minus A and A is equal to R1 plus R2 है, चलो R1 और R2 दो R, so A will be equal to R plus 2R, so that implies A is equal to 2R, right? So these are the two things you need to remember. Whenever angle of minimum deviation takes place, this will be 2I minus A and A will be equal to 2R. A is the angle of the prism, ये बात। This angle is the angle of the prism. ये A angle of the prism, ठीक है? Angle of the prism, we call it, and ये इसको हम लोग refracting angle of the prism भी बोलते हैं या angle of the prism भी बोलते हैं, कोई भी है, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से I क्या मिलेगा बताओ तो हमको, A को लेफ्ट में आके लेके आएंगे तो A plus delta minimum by 2 आएगा, delta minimum by 2, और यहाँ से R क्या मिलेगा, A by 2 आया। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1, mu2 है ग्लास के लिए, mu1 है एयर, तो उसके लिए 1 रहेगा, तो mu को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin I by, अब देखो I क्या है, A plus sin of A plus delta minimum by sin of A by 2. So this formula is used to evaluate the refractive index of a prism. Why? Because A तो मिल जाएगा directly, हम लोग protractor यूज करके A का वैल्यू निकाल लेंगे, और डेल्टा मिनिमम कहाँ से मिलेगा, हम लोग स्कूल में शायद तुम लोगों का ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, एक प्रिज्म रख के डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब रे ऑफ लाइट गिरता है विल गेट डिफरेंट वैल्यूज और उससे ग्राफ बनाना पड़ता है, और वो ग्राफ से हम लोगों को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है, वो लेके हम लोग इधर डाल देते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके निकालते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जल्दी से लिखो क्विकली। Well, so the next thing is maximum angle of deviation. You did minimum angle of deviation. Maximum angle of deviation कब होगा? जब ये जो सेकेंड सरफेस है वो सेकेंड सरफेस से रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं। मतलब द सेकेंड सरफेस इंसिडेंट रे जो होगा वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होगा। If this angle of incidence R2 is equal to critical angle, if R2 is equal to critical angle, then angle of emergence कितना हो जाएगा? Then E will be equal to, it is critical angle है, तले the angle of emergence will be raising, तले A angle का क्या होगा? Then angle of emergence E will be equal to 90 degree. ये वाला सिचुएशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डिविएशन, the deviation becomes
मैक्सिमम, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग और एक चीज भी बोलते हैं क्रिटिकल, सॉरी, द लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला फर्स्ट वाला सरफेस में अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लेते हैं, with the angle of incidence is I over here, then this angle of incidence is called the limiting angle of incidence. First angle of incidence को हम लोग limiting angle of incidence mention करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट थिंग हम लोगों को पता है कि A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है और C A is equal to R1 plus R2 implies A is equal to R1 plus the critical angle টা কেন আমরা একটা নাম দিই, নাম বুঝতে আসবে। আমরা সে দিস ইজ থিটা সি, থিটা সি কেন আই নাম দিলে আবার বুঝতে অসুবিধা হবে, এটা আই। সো R2 is equal to theta c, theta c means critical angle, ঠিক আছে, theta c means critical angle। so A is equal to R1 plus theta c implies R1 equal to কি হবে A minus theta c, right? Now for the first surface you can understand sin I1, sorry, sin I by sin R1 is equal to mu। For the first surface sin I by sin R equal to mu2 by mu1, इसके हिसाब से mu r है। You understand why? Because mu1 is air जो refractive index 1 होता है उसका, इसलिए इसको mu लिए, sin I by sin R1 equal to mu। और सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो रहा है, sin theta c by sin 90 degree is equal to 1 by mu, राइट। तो यहां से हम लोग अगर ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, what shall we get? sin I, अच्छा मल्टीप्लाई कुछ नहीं, just add the limits, एक वन दे रहा है। Look at this expression only, just look at this expression because this is what we know, sin theta c equal to 1 by mu। This is actually a formula, so we cannot make much use of this, let it be apart। From this one I can write sin I equal to mu sin R1, which R1 is what, theta c, right, A minus theta c। so I becomes equal to sin inverse of mu A minus theta c। so this angle of incidence is called limiting angle of incidence। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, limiting angle of incidence। so what is limiting angle of incidence? The maximum angle till which will get the emergent ray। एक থেকে বেশি হয়ে গেলে you will not get any emergent ray, কি হবে, total internal reflection হয়, এখানে ফেরত চলে আসবে। is that clear? কেন এর থেকে বেশি মানে আমি এটা আরো এদিকে চেঞ্জ করব, angle of incidence টা বাড়াবো, তখন এখানে emergent ray টা ফেরত চলে আসবে। so this is called the limiting angle of incidence, limiting angle of incidence। ঝটপট লিখুন।